A very warm welcome to all the dignitaries, esteemed resource person, faculty members, and enthusiastic participants to the fifth and the final day of our 5-day National Development Faculty Program. Good afternoon, everyone. I am Ms. Twinkle Daniel, Assistant Lecturer, Choitram College of Nursing, hosting this last session of our 5-day National Faculty Development Program. Before starting today's session, I request all the participants to be present with us throughout the session as the post-test and the feedback link will be shared after the session in the chat box. Participation certificates will be shared only to participants who will be filling the feedback form. The recordings of FDP sessions are available on the official YouTube channel of Choitram College of Nursing. Bridging the gap between classroom learning and clinical excellence, our next speaker is a passionate educator and visionary leader in nursing education, Mrs. Sapna Thakur ma'am. It is my privilege to introduce our esteemed speaker for today's session, Mrs. Sapna Thakur ma'am, an accomplished academician and a nursing leader. Ma'am is having around 25 years of experience in both clinical and academics. She is currently serving as an associate professor at Government College of Nursing, Durg, Chhattisgarh, and is the in charge principal of Government College of Nursing, Kurud, Dhamtari. An alumni of the M.Sc Nursing batch of Choitram College of Nursing of batch 2006 and 2008, ma'am bring with her a wealth of experience in nursing education, clinical training, and academic leadership. Ma'am has been recognized for various awards and prizes. Ma'am is awarded with Florence Nightingale Award by Government College of Nursing, Indore. Ma'am has gained 7th rank of merit in B.Sc Nursing. Ma'am is also a gold medalist in PG from Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore in 2008. Ma'am has been recognized as chairperson and resource person in various conferences and faculty development programs and in various workshops. Ma'am has also received Savitri Bai Phule Award by Sri Shakti Chhattisgarh in 2006. And ma'am has various numerous achievements that cannot be said in this short period of time. With this, I welcome you, ma'am. Today, ma'am will enlighten us on the highly relevant topic, clinical practicum, utilization of skill lab, clinical learning outcomes, continuous clinical assessment, and challenges in implementing the semester system. Ma'am, we are truly honored to have you with us. On behalf of Choitram College of Nursing, Indore, I extend a warm welcome and request you to kindly take over the session. Over to you, ma'am. Thank you, Twinkle, for such a wonderfully presented my profile. Am I audible? Yeah. So here I'm going to share my slides. Is it visible? No, ma'am. Now it's visible. Visible, no? So, okay, just a minute. Sure. Yeah, okay. So empowering our future healthcare providers requires not only the application of our theory and the clinical requirements, but it also requires the effective utilization of our skill lab. So very good afternoon to our esteemed colleagues and the participants. And first and foremost, I would like to express my gratitude to the organizing team of the Choitram College of Nursing, Principal Dr. Shrija ma'am, Rakhi madam, and whole team of ECO, those who have given me the opportunity to share my experience with you all. Conducting this faculty development program and understanding about the semester system syllabus
and discussing about the different aspect of that semester system syllabus is before implementation. It really reflects your deep understanding, deep sincerity, and the honesty towards the teaching, towards the teaching and your work, and towards the students also. So I really congratulate you all, the team of Choitram College of Nursing. Now, when we talk about the developing the clinical competencies among the nursing student, which is one of the very crucial aspect, I think, to discuss about. And when we talk about the clinical, to develop a clinical competency, so many queries and so many questions arises in the mind of the nursing teachers. So I will do my best to address all this type of queries. And our semester system syllabus is so well designed and so well equipped, and it holds all type of answers, which which the questions we all are arising in our mind when we are talking about the clinical, how to develop a clinical competencies among the students. So let's start with the clinical practicum. Before this session, this is the last one. So in the previous sessions, very nicely, all the resource person have taken the classes about the theory and the hours, the credit system distributions. So I'm not going to deal. I'm just I'm focusing basically on the how to utilize and whatever the skill hours are given in the syllabus of semester system, how to complete that requirements. So here there is one photo. I think you can see and you can imagine there is a two scenario in which one nurse, both are the nursing students from the different college. They both are working in the hospital. Here you can see the difference. First, one is smiling, one is doing very good, means she is very looking very confident in implementing the nursing procedure. Another student, she is very confused, looking very anxious. She is doing some mistakes, I think, and she's like that, whether it is right or wrong. So she is confused. So what do you think? They both have completed their 240 hours. They are very competent enough. They have passed their examination, but still there is a difference in their uh, clinical when they are performing their skills in the clinicals. So what made the difference? So I can say the quality of skill lab used in their colleges, that makes the difference in that. So what will be the training objective? This is the training objective that after this class, I think we will enhance the effective utilization. I will tell you how to effectively utilize the nursing skill laboratories. Then we will learn the strategies of clinical practicum supervision method to fulfill the learning. Then to develop a measurable clinical learning outcomes, to understand the continuous clinical assessment methods and address the challenges in a semester system implementation. So these are all our objectives of this session. Now, this is the revision of our previous class. So already we have seen that in this semester system, we have total 8 semester in which we got 26 weeks in each semester, and in that 26 weeks, we will get 20 weeks for the study. 6 weeks will be reserved for the vacations. It is given already 3 weeks for the exams, 2 weeks for preparation, 1 week for holiday. So ultimately, we have the 20 weeks to work. In that 20 weeks, according to the INC, they have given the 40 hours per week. 40 hours they have calculated like 5 hours, 5 days, 7 hours, and 1 day, Saturday, 5 hours. But in our setting, we are not having the half day in Saturday. So we are calculating here 7 hours again in Saturday. So according to INC, it is 40 hours. Agar if you are running full day on the Saturday, then it will come 42 hours. So like that, it depends upon your hospital, your college. And when I multiplied with 20, so it will come 800 hours.
So in that way, ultimately, we have the 20 weeks to work. Now, in that 20 weeks, again, this is the revision of the previous class, that credit hours are different in theory lab and the clinical. Like, just to revise, 20 hours is given 1 credit in theory, 40 hours lab, it will give 1 credit, and 80 hours in clinical, it will give 1 credit. So it will calculate according to that. Ratna madam has very nicely, she has taken this all credit, and this is up to 7 semester. Now at the 8th semester, we don't have the theory classes. We have the 22 weeks of working, in which totally the students will go into the clinical areas for the internship, and the guideline already given in the book, how week wise they have to be posted in the hospital. So this is what already done. So it's just a revision of that. Now we will see, basically I want your attention here in this theory hours already. Yes, in the syllabus we have the different category, how much anatomy, physiology, so that accordingly we can make the timetable. But in this skill lab activity, now in the skill lab activity, you just see in the first semester we have the skill lab, SL for skill lab. So SL skill lab is 80 hours. 80 hours means 2 credit, and clinical is about 160, that is 2 credit. And this skill lab activity will be for the nursing foundation. Now in the second semester, we have the skill lab activities 120 hours, matlab 3 credit, and clinical is more here, 320 hours, ये increase हो गया in the second semester. So this is the first semester, this is the second semester. First semester में nursing foundation का कोई भी exam नहीं है, but we have to complete all the procedures which is given in the syllabus to complete in that एरिया. सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम होगा नर्सिंग फाउंडेशन का प्रैक्टिकल. And in the third semester again we have the skill lab activity is 40 hours, that is 1 credit of adult health nursing, and 40 hours more in microbiology, that is what lab activity done in the micro, like making slides and all. So that 40 hours is given for microbiology. Then in the fourth semester, again, in the third semester, we have the adult health nursing practical exam for the student. Now, in the fourth sem, again, we have the 40 lab activity for the adult health nursing. And again, the students have to be appear in the examination final. In the final exam, they have to give the practical of adult health nursing here in the fourth sem. Now, in the fifth sem, we have the skill lab activity 80 hours, जो कि child health का रहेगा 40 hours, and education is added in the fifth semester. So education means there are some means practical work, like taking the practice teaching classes, small micro teaching classes, and some projects are there for the students. So for 40 hours they have given for education. So we have the child health nursing on fifth semester, and we have the 40 clinic this clinical skill lab hours for the child health. When we go through the clinicals, it is 400 total, it is given, which is divided among the child health, community, and the mental. Please give the attention that community health nursing is not having any skill lab activity hours. Whatever the procedures are shown in the community, it will be there directly into the community setting area. But skill lab activity hours is not given for the community and the mental health nursing. It is given only for the child health and the education in the fifth semester. In the sixth semester, again, we don't have the examination of child health and mental health exam, practical exams. And in the fifth semester, we are going to give, students are going to give their examinations on the sixth semester. जिसमें again 40 hours skill lab ओबीजी को दिया गया है, चाइल्ड हेल्थ को यहाँ पर कोई भी स्किल लैब आवर्स नहीं है. जो भी प्रैक्टिकल्स हैं फिफ्थ सेमेस्टर में वी हैव टू कंप्लीट इन दी फिफ्थ सेमेस्टर ओनली. चाइल्ड के लिए स्किल लैब एक्टिविटी की कोई भी आवर्स हमको सिक्स्थ सेमेस्टर में नहीं दिया गया है.
जबकि हमारा प्रैक्टिकल उस समय वी हैव टू कंडक्ट द प्रैक्टिकल इन दैट 6th सेमेस्टर, चाइल्ड हेल्थ का एंड मेंटल हेल्थ का। ये जो 40 आवर्स दिया है ये ओबीजी के लिए दिया हुआ है। तो स्किल लैब में जितने भी प्रोसीजर्स होंगे स्किल लैब में ओबीजी के 40 आवर्स हैं। और ये कंबाइंड, दिस इज द कंबाइंड आवर्स, क्लिनिकल आवर्स 560 which is the student will be posted in child health, mental management and the OBG. So these areas student will cover in 6th semester. And the exam, practical exams will be held for the child health, mental health. Again, the last one 7th semester जिसमें theory exam last है, ये end है theory exam का। तो 7th semester में 120 skill lab hours हैं। 120 skill lab hours basically it is given for the research के लिए 80 skill lab hours हैं, क्योंकि students are doing their project, they will complete their project on these hours। यहीं पर ही उनको project complete करके अपना bind करवाना है। And rest 40 hours is given for the OBG, and this clinical hours which is in the hospital they have to complete for the midwives, 480 hours for the midwives। So student will give the also the community, so student will give again the examination of community and midwives in the 7th semester। And in the 8th semester last, there will be no theory classes, only this much hours they have to complete according to the clinical distributions given in the syllabus। All the clinical areas we have to post them, and simultaneously they will conduct all type of OSCE, which we are going in further slides। So this is all about, this is the total clinical experiences which they will gain on the 8th semester। There will be no theory examination, only the OSCE will be conducted for the competence to gain to evaluate their competency। Again, this is already done। Total theory which they are getting after completion of 8th semester is 1800, credit is 90, lab skill that 600 hours they will get 15 credits, clinical they will 3936 hours is given and 36 credits they will cover। The main thing which we should see is that up to 7th semester we have the skill labs 600, मतलब 17% of total हमारे सिलेबस का ये रहेगा। ये मैंने लास्ट आगे की स्लाइड में भी ऐड किया है कि मोस्ट ऑफ द लैब एक्टिविटी शुड नॉट एक्सीड देन दी 30%। कि जितने भी हमने क्लिनिकल के आवर्स रखे हैं या जितने भी हमने क्लिनिकल और लैब के आवर्स, तो ऐसा नहीं है कि हमें सारा प्रोसीजर लैब में कर देना है या हमको सिमुलेशन के थ्रू करना है। उन्होंने जस्टिफाई ये किया है आईएनसी ने कि ओनली 30% ऑफ टोटल प्रोसीजर्स विल बी कंडक्टेड इन दी स्किल लैब्स। तो इस तरीके से एंड रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स आर गोइंग टू बी कंडक्टेड इन दी क्लिनिकल एरियाज, जैसे हम पहले करते थे वैसे ही हमको कंडक्ट करना है। So again, we have seen so many hours, a lot of hours are there in the skill labs and the clinical areas। So how to manage the time constraints and ensure the timely curriculum completion? तो इसके लिए again I have done some calculation to show you कि ये टाइम जितना हमको मिल रहा है 20 वीक्स का, ये हमको बहुत सफिशिएंट टाइम है जिसमें हम स्किल लैब एक्टिविटीज भी करा सकते हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग भी और थ्योरी भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो हाउ टू डू दैट, तो ये एग्जाम्पल आई हैव टेकन फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर का लिया है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का सपोज फर्स्ट वीक तो ओरिएंटेशन में निकलता है। फर्स्ट वीक से ही हम फर्स्ट सेम का तो हम नहीं स्टार्ट करते हैं, मोस्टली सभी जगह ये शायद रूटीन है। तो फर्स्ट वीक इज फॉर ओरिएंटेशन, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लासेस। 3 वीक थ्योरी कंप्लीटली कंप्लीट ब्लॉक में हम रखेंगे उसको। तो 7 आवर्स, ये टेंटेटिव प्लानिंग है। तो 7 आवर्स फॉर 6 डेज, एज आई टोल्ड यू, अगर आप लोगों का हाफ डे होता है 5th सैटरडे तो यू कैन टेक 5 आवर्स। तो 7 आवर्स हमने लिया एक दिन का 6 दिनों तक, 3 वीक तक वी आर कंप्लीटिंग 126 आवर्स। इसमें हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन एंड सोशियो साइको ये क्लासेस रहेंगी इनकी। देन स्किल लैब आवर्स वी विल स्टार्ट आफ्टर 3 वीक, जब नर्सिंग फाउंडेशन के कुछ थ्योरी की क्लासेस हो गई हैं फिर हम स्किल लैब आवर्स स्टार्ट करते हैं। तो ये हम 2 आवर्स पर डे चालू करेंगे। देन इट इज फॉर 5 डेज, एक दिन छोड़ दिया।
और 8 वीक्स तक रन करेंगे तो 80 आवर्स जो दिया हुआ है ये कंप्लीट हो गया हमारा। एंड साइमल्टेनियसली वी आर रनिंग 5 डेज है हमारे, 5 आवर्स हैं हमारे पास बचे, तो ये साइमल्टेनियसली 240 आवर्स हमारा थ्योरी का कंप्लीट हो गया इन 8 वीक में। Then we will start the clinical posting of the students in the hospital. So clinical posting we are sending, suppose we are sending for 4 hours for 5 days, Sunday Saturday हमने उनको कॉलेज में बुला लिया, and 8 for 8 weeks we are going to cover 160 hours. तो ये भी complete हो गया हमारा clinical hours. और simultaneously after lunch student will come to the college, 3 hours teaching will be there और 144 hours का theory block लग गया हमारा. And now the hours which is completed here, so 126, 240 and 144 total 510 theory hours we have completed, means theory hour is given 400, तो हमने 110 extra hour we are getting after giving all the type of leaves and 6 weeks तो हमने leave कर ही दिया है, 1 week orientation के लिए भी छोड़ दिया, but फिर भी we are having the extra hours, that is 110 extra hours more than a 40 वीक्स, अगर 42 हम माने तो हमारे पास पूरा 1 हफ्ता, 1 से 1.5 हफ्ता एक्स्ट्रा है. तो इन दिस वे आई जस्ट वांट टू शो यू दैट देयर इज नो नीड टू बी टू मच टेंशन कि नहीं होगा या इतने सारे स्किल कम है. Then again further slide again I want to show before starting that. So first semester and second semester I told you that nursing foundation का एग्जाम इन सेकेंड सेमेस्टर होगा. टोटल स्किल लैब आवर्स दिए हुए हैं फर्स्ट सेम में 80 आवर्स, सेकेंड सेम में 120 आवर्स जो कि नर्सिंग फाउंडेशन के ही हैं. मतलब 200 आवर्स वी आर हैविंग बिफोर कंडक्टिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो सेकेंड सेमेस्टर में होने वाला है. तो हमारे पास 200 आवर्स हैं अभी. 200 hours में when you will open the logbook which is given at the back side of your syllabus, तो logbook सारे subjects का logbook क्या क्या clinical requirement everything is given. I have kept the picture also in my further slides. तो logbook में फर्स्ट सेम में 46 प्रोसीजर्स दिए हुए हैं और सेकेंड सेम में 100 प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, मीन्स 146 प्रोसीजर्स वी आर given by the INC which we should conduct in our among the student. और इंडियन नर्सिंग काउंसिल का गाइडलाइन जो मैंने आपको बताया, मैक्सिमम 30% ऑफ ऑल स्किल प्रोसीजर्स कैन बी परफॉर्म बाय द स्टूडेंट इन द स्किल लैब सिमुलेशन लैब for all clinical nursing courses except the community health nursing and mental health nursing, in which percentage allowed is 10%, क्योंकि उनके स्किल लैब आवर्स नहीं दिए हुए हैं कम्युनिटी और मेंटल के. तो इनका 146 प्रोसीजर का टोटल आता है 44 प्रोसीजर. तो 44 प्रोसीजर्स अभी हमारे हाथ में हैं और हमारे पास 200 स्किल लैब आवर्स है जिसमें हम दिखा के स्टूडेंट को रिपीट डेमोन्स्ट्रेशन, रीडेमोन्स्ट्रेशन, सिमुलेशन हम सभी इसमें बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं और हम करते हैं. तो in this way we have the ample of timings in which we can do all these skill lab activities and not all the procedures, which procedures are prescribed to be shown in the skill lab simulations we can conduct there. This is the logbook. You can see at the back side it is given in the, it started from the 418 and very nicely they have written all type of procedures they have performed independently, whether they have assist observed procedures they have just observed, then also we have to note it here. स्किल लैब सिमुलेशन में दिखाया तो वी हैव टू नोट, या क्लिनिकल एरिया में भी दिखाया तो वी हैव टू नोट द डेट and sign of that tutor, those who have seen. So we can document here also in our logbook and it is also available in our syllabus, also available in the market. अभी बहुत सारी लॉगबुक्स इन्हीं के पैटर्न में अवेलेबल हैं तो आप वो परचेज करा सकते हैं. Now we will see the utilization of the skill lab. कि whether yes we all are using these skill labs here. अभी what is the difference in that syllabus system? इसमें क्या थोड़ा सा difference आया है, we just discuss it. So this is what the actual nursing foundation lab. And you know why we are using the nursing skill laboratories, because it is very safe area for the student. They can make the mistakes over there. There is no one to scold them in the hospital if they will make the mistake.
then it is a great risk for the patients also. So nursing laboratory areas should be well developed. Always it will provide the safest place for the student to do the practices. It is according to the standards, should not be haphazard. All the standard protocols should be written in our nursing skill labs, which will build the definitely build the it will help to build the confident in environment among the students. So now when we are introducing the simulation and scenario based learning also in our demonstration method or in our skill lab, so it will develop the psychomotor skill also, communication skill among the student, critical thinking skill, decision making skill, and definitely our student will become more confident and they can use the clinical judgment. So look at this is the picture of a girl who is posted in the hospital. Now see the face of that student. She is uh, very fearful, anxious, and she is thinking that how to touch, how to turn. It's very difficult. How to give the oral care. Madam told me to give the oral care. That is always happening in that. But if we are following the skill lab properly, if we are doing the practices there in the skill lab, this will not happen in the hospital. The student will not face that thing. So skill lab laboratory is actually bridge between the theory and the clinical practice. How? Because the students are completely doing the practice procedure repeatedly over there. They will learn in a risk-free environment. वो डरेंगे नहीं कि कुछ harm हो जाएगा, इस डर से वो बेहिचक करेंगे अपना procedure, and definitely it will develop the confidence and the clinical judgment before contacting to the patient. These are some very important points which we should remember, that competency based structured skill training कैसे दें हम. So all laboratories should function according to the clearly defined clinical competency every procedure should have. Before that, अभी तक हम करते थे procedures. Yes, we are showing the demonstrations in the clinical labs to the patient, nursing students. But actually specific learning objectives, I think ये थोड़ा सा हमारा टारगेट ये कम रहता था, या कई इंस्टीट्यूशन में आई डोंट से कि ये फॉलो होता है, बट मोस्टली ये टीचर्स भूल जाते हैं. स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब हर प्रोसीजर के पहले वी शुड राइट डाउन इन द बोर्ड व्हाट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ, और इट शुड बी वेरी इन अ वेरी इजी टर्म. That suppose agar if we are going to show the demonstration on the oral care mouthwash, so the thing is not that the student will be able to perform the mouthwash in the patient. There should be three or four learning objectives, like student will able to counsel the patient for the mouthwash. Student should do the procedure with the proper steps and following proper scientific principles of the mouthwash. Third, patient can interact with the nurse can yeah, nursing student can can interact with the patient during the procedure. So these three learning objectives we can make. तो स्टूडेंट को पता रहेगा पूरे टाइम कि हाँ मुझे बात भी करनी है, मुझे पेशेंट को काउंसिल भी करना है, और मुझे पूरे स्टेप्स साइंटिफिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए करना है. तो वी शुड ऐड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स व्हाइल वी आर शोइंग एनी टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन. डेमोन्स्ट्रेशन स्टैंडर्ड्स, यस वी शुड फॉलो सम, या तो हॉस्पिटल की अपनी पॉलिसीज रहती हैं जिसको हम डेमोन्स्ट्रेशन को फॉलो करते हैं, या फिर आप कोई स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करते हैं. तो दैट शुड बी, बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड्स. ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर का टीचर कुछ अलग डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा है, वही बच्चा जब एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के लिए जा रहा है तो दे आर फॉलोइंग सम अनदर स्टेप्स. तो ये सिमिलैरिटी होना बहुत जरूरी है अमंग दी टीचर्स अमंग दैट कॉलेज, इन दैट कॉलेज. देन स्टेप वाइज प्रोसीजर चेकलिस्ट, ये आगे मैं दिखाती हूँ आपको. रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन, असेसमेंट रूब्रिक एंड रीमेडिएशन प्लान के बारे में हम we will talk. This is the demonstration. See, the teacher is showing the demonstration. So faculty demonstration, nursing teacher will demonstrate all the procedure by using all the standard protocol, scientific rationals.
scientific rationals, communication techniques, safety precautions with all ethics and the moral values. So see here, the teacher is showing in the mannequin. Here, a nursing teacher is using the low fidelity simulator in the hand. She is showing the procedure to the students. And at the back side, you can see there is a blackboard. And this blackboard, in that we can write the learning objectives so that the student can able to see the learning objectives and simultaneously the procedure. Guided practice, yes, after doing the procedure, here I'm not able to show the teacher, but teacher is there. Under the supervision of the teacher, all the students are divided into the groups and they are doing the practice before showing the written demonstration and developing the confidence. So in a small group, the students are going practicing, that is guided practice. Then after when they develop little bit of confidence, then they are showing the written demonstration. And in that, student independently perform the procedure while faculty evaluate the competency by using the checklist. So here, teacher is using the checklist to evaluate the student and student is showing the written demonstration to this teacher. So like that, the student will develop the skill. Repeat demonstration until the competent. Somewhere there is a guideline that at least 80% the student should get, then only the student will be marked competent. So, but it depends upon your policy, how much competency you want. That student should be in that level 1, level 2, and level 3 competency. In which criteria you are going to follow depends upon your hospital, your college also. Skill lab demonstrations are already given in your syllabus. You can go through that. जितने भी नर्सिंग फाउंडेशन या पीडियाट्रिक्स या ओबीजी जिनका थ्योरी का सिलेबस दिया हुआ है, उनके नीचे कंटिन्यूशन में प्रैक्टिकल का सिलेबस भी दिया हुआ है एंड दे हैव वेरी क्लियरली डिफाइंड कौन सा स्किल लैब डेमोन्स्ट्रेशंस करने हैं और बाकी को आपको हॉस्पिटल में यू हैव टू परफॉर्म ओवर देयर. तो वाइटल साइंस, जैसे ये फर्स्ट सेम का प्रोसीजर है, वाइटल साइंस, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, हैंड हाइजीन एंड पीपी, bed making, positioning, transferring the patient, ROM. So look at this. This is only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maximally, it will be taking 15 hours. Or baki rest hours में we can see written demonstration and we can also plan for the simulation. Yes, checklist. Here I'm showing you. So many teachers are asking कि madam कहीं पर checklist है क्या, standardized. So many times these questions are asked. So that's why I have kept this to show you just an example. It is available now with the procedure. The checklist are available. First year से लेके सारे year तक का checklist आपको मिल जाएगा. This checklist we are following in our institution, and this I have taken from this book, Clinical Nursing. Elsewhere की book है ये, तो इसको हम follow करते हैं. You will also get this thing into the market. आप एक अच्छा standard वाला जो है वो आप use कर सकते हैं checklist को, या फिर आप अपने institution का जो आप लोगों ने develop किया है, that also you can follow. Now we have talked about the assessment rubrics. So what is that? In that assessment rubric, if we are focused to take the demonstrations actually, but in the education and training rubric is a scoring guide that explicitly outlines the criteria, standard grading scales used to evaluate the student work. It clarifies the expectation by detailing what constitute varying level of achievements, excellent to poor, for each component of an assignment. तो इसको मैं बोल सकती हूँ कि रेटिंग स्केल व्हेन वी आर डेवलपिंग फॉर द परफॉर्मेंस, so that is what the assessment rubrics, whether which excellent to poor we are giving in mostly in the rating scale. So if we can also use that thing to grade the student in their clinical performance की जो demonstration वो दिखा रहे हैं, तो उनके वर्क को इवॉल्युएट करने के लिए असेसमेंट रूब्रिक्स. तो yes, if we are using the checklist also, so that is what the part of that assessment rubric.
तो वो डेफिनेटली, हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि whenever you are using any showing any demonstration, you keep your checklist with you, and step by step student will also look at that कि madam is also doing step by step procedure, just whatever is written in the checklist. So when you are going to conduct the OSCE जब आप करेंगे तो स्टूडेंट को बड़ा अच्छा वो मिलता है, मीन सपोर्ट मिलता है कि हाँ मैडम ने भी यही स्टेप फॉलो किए थे, तो वो याद रखते हैं वो स्टेप को। तो हमेशा चेकलिस्ट के साथ ही आप डेमोन्स्ट्रेशन स्टूडेंट्स को दिखाएं। ये आई एम स्किपिंग। remediation plan is also very important. It gives you, हमको कई बार हम ये होता है कि like in our previous teaching what we are doing, we are sometime when the students are not performing the procedures, we are saying कि नहीं, sometime we are means, we are judging, our attitude are changed towards that student is not doing that particular procedure, या ऐसा कभी पहले बहुत पहले ये हमारे इसमें हमने भी फेस किया था कि हाँ अगर हम प्रोसीजर नहीं कर पा रहे हैं तो वी आर फेसिंग लॉट ऑफ गुस्सा ऑफ द टीचर। Remediation plan is included nowadays. It is totally saying that teacher is not an instructor, he is the facilitator. Means you have to facilitate the, you should not act like a instructor कि उनको डर नहीं लगना चाहिए हमारे खड़े होने से। वो रीमेडिएशन प्लान तभी हमारा काम आएगा। रीमेडिएशन प्लान एक्चुअली क्या है कि कहाँ एक्चुअली पेशेंट स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है, वो इशू आइडेंटिफाई करके रूट कॉज एनालिसिस करके then we can take the corrective actions. We can also assign the accountability. हम किसी टीचर को असाइन कर सकते हैं कि रिपीट आप देखिए इसका या आप इसका रिपीट डेमोन्स्ट्रेशन करिए। टाइमलाइन निर्धारित कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ही वो स्टूडेंट शुड फिनिश और इतने टाइम तक वो सीख जाना चाहिए। वैलिडेशन एंड मॉनिटरिंग थ्रू आर यूजिंग दी स्टैंडर्ड चेकलिस्ट ऑन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कर सकते हैं। तो आई हैव केप्ट द एग्जांपल ऑफ मिनी सीएक्स एंड रिफ्लेक्टिव जर्नल। आप उसको देखेंगे आगे फर्दर स्लाइड में मेरे, तो यू विल गेट द आइडिया अबाउट दैट। तो रीमेडिएशन प्लान इज नथिंग, इट इज जस्ट टू फाइंड आउट द कॉज कि क्यों स्टूडेंट आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट प्रोसीजर और वो क्यों डिसीजन पावर नहीं आ पा रहा है उसमें, और वो फाइंड आउट करके वी आर टेकिंग द रेमेडियल एक्शन। So that is what the remediation plan. Here, this is the documentation part. Already I have shown this one. ये documentation है, जो student जब procedure दिखाता जा रहा है, we can write down and we can write down the dates, so it will be documented always. Yes, it's very important point which we should discuss, that is use of simulation based learning. We have shown the demonstration, we have taken the written demonstration, and now the students are competent enough to show that particular की IV line वो तैयार कर सकते हैं, कि annualization वो कर सकते हैं। Now we know कि हाँ हमारे students can do that thing. Now without simulation that is not, अभी वो complete नहीं हुआ है। तो simulation based learning gives the student chance to practice, make mistakes, think critically and improve confidence before touching the real patient. तो अभी हम एक स्टेप दूर हैं, बिना सिमुलेशन के हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे, हमारे स्टूडेंट भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा भले ही वेरी ट्रेन्ड टू डू दैट ऑल डेमोन्स्ट्रेशन। So what is simulation? So actually this is very big classes, and I recommend you all to you as a teacher, or if you are a nursing foundation or a clinical teacher, so please go through the simulation based learning teaching program. ये पूरा SGT में 7 days 6 days का SGT में बहुत अच्छे से कराया जाता है, जिसमें हम we get confident enough to how to make a simulation based learning। या फिर आप कभी भी बिल्कुल इस पे यदि आपने अटेंड किया है तो आपको पता होगा, और जिन्होंने अटेंड नहीं किया है वो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएंगे जब तक इसकी आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो इट्स वेरी गुड मेथड। चाहिए इसमें कॉम्पिटेंसी कि हम सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग करें, तो ये बिल्कुल आपको रिकमेंडेड है कि आप इसकी ट्रेनिंग जरूर लें। सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग इज अ टीचिंग स्ट्रेटजी दैट इमिटेट्स द रियल क्लिनिकल सिचुएशंस। हम सारा रियल सिचुएशन बनाते हैं लैब में। जिन्होंने अटेंड नहीं किया है उनके लिए मैं ये बताना, बस उन्हीं के लिए मैं ये डिस्कस कर रही हूँ, और जिन्होंने अटेंड किया है दे नो it helps the nursing student to develop the clinical skill, communication, critical thinking, decision making and teamwork.
So it will provide the safe and controlled learning environment. Student can repeat the procedure until competency is achieved. Those who have done this simulation based learning, they this one, but तो देन दैट ग्रुप की जिनको सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग नहीं अटेंड किया होगा, तो जस्ट फॉर देम कि ये जब हमने प्रोसीजर्स दिखा दिए, सपोज हमने सारा प्रोसीजर दिखा दिया उनको, वाइटल साइंस मॉनिटरिंग दिखा दिया, एंड द स्टूडेंट आर आल्सो competent enough to do the vital recording the vital signs and oxygen administration हो गया उनका, turning the position, shifting the position, these all procedures we have shown to them. Now we will make a case scenario. Or case scenario ka there is a template. Just I'm skipping the slides. Yes, there is a template of making that scenario. और इस सिनेरियो में हम पूरा ब्रीफ करते हैं कि एक पेशेंट आया है वार्ड में एंड ही इज हैविंग हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स टाइगर्स एंड उसको ही इज हैविंग डिस्निया आल्सो. Now there are 4 nurses, there are 5 students. You are there in that casualty ward. Now perform your work. What you will do? तो स्टूडेंट को सिनेरियो में हम छोड़ देते हैं, स्टूडेंट जाते हैं, वी आर मेकिंग सम स्टैंडर्डाइज्ड पेशेंट, हम एक पेशेंट अपने ही स्टूडेंट के बीच में या फैकल्टी किसी को बना दिया जाता है उसमें, और वहाँ सारी इक्विपमेंट्स आपके लैब में होना चाहिए, वाइटल साइंस रिकॉर्डिंग, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का सारा इक्विपमेंट होना चाहिए. Now they are performing, they are receiving the patient, they are talking the patient. एक नर्स उसका वाइटल ले रही है, एक नर्स उसका उसको ऑक्सीजन स्टार्ट कर रही है. तो ऑल दे आर परफॉर्मिंग ऑल दिस प्रोसीजर इन अ टीम. तो ये सिमुलेशन में दे आर लर्निंग कि हमको कैसे टीम में काम करना है, हमको कौन सा प्रोसीजर पहले करना है, उसका टेम्परेचर पहले लेना है, कि उसको ऑक्सीजन पहले स्टार्ट करना है, कि उसका आईवी लाइन मेंटेन करना है. तो ये स्टेप दे आर लर्निंग इन दैट सिमुलेशन सिनेरियो. और ये जब तक हमारा नहीं हुआ है, ये होने के बाद ही स्टूडेंट विल गेन फुल कॉन्फिडेंस टू वर्क इन द कैजुअलिटीज और इन द वार्ड इटसेल्फ. दिस इज द टेम्पलेट विच वी आर मेकिंग इन सिनेरियो बेस्ड. जब हम बनाना रहता है तो ये टेम्पलेट में हम फिल करके वी आर कंडक्टिंग द सिमुलेशन. Here you can see the simulation का एक डायग्राम डाला है, इसमें एक स्टूडेंट जो आईवी लाइन लगा रही है, एक उसके साथ हेल्प कर रही है, अनदर वन इज स्टार्टिंग द ऑक्सीजन, one is taking the history, another is counseling to the attender, and she is the observer, means she is recording all these same points कि कहाँ पर किसने क्या गलती किया. So we should have the checklist of all the procedure, like IV लाइन का हमारे पास चेकलिस्ट होना चाहिए, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का कि इस बच्ची ने अगर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन किया, वी शुड हैव द कीन एज अ फैसिलिटेटर, वी शुड हैव कीन ऑब्जर्वेशन की उसने कौन सा स्टेप गलत किया या सही किया. एवरीथिंग इज टू बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली. देन आईवी कैनुलाइजेशन वो कर रही है, तो वेदर शी इज एबल टू फॉलो ऑल दी स्टेप्स ऑफ आईवी कैनुलाइजेशन और नॉट. ये काउंसलिंग कर रहे हैं, तो वेदर शी इज दी अनदर नर्स इज काउंसलिंग, तो वो काउंसलिंग के कौन कौन से पॉइंट्स को कवर कर रही है, प्रोफेशनली इथिक्स एवरीथिंग शी इज गोइंग टू फाइंड आउट और नॉट. So this is what simulation is actually, and this actually, if we are doing proper in a proper way, the student will gain the confidence. ये I have the experience with the simulation क्योंकि नर्सिंग आई एम ए पीडियाट्रिक टीचर, तो मैं रिसक्सिटेशन पढ़ाती थी, न्यूनेटल रिसक्सिटेशन. लेकिन जहाँ जब मैंने सिमुलेशन स्टार्ट किया, केस सिनेरियो दिया, उनको एक मदर बना दिया, मदर चिल्ला रही है, शाउट कर रही है, दूसरी उसको 3 नर्सेज वहां पर स्टूडेंट नर्सेज खड़ी, तो पहले सिमुलेशन में तो वो सब वो हो जाते हैं, बिल्कुल डर जाते हैं. दूसरी बार फिर मुझे रन करना पड़ता है, जब वो सिचुएशन के साथ में अकोमोडेट होते हैं, देन दे आर स्टार्टिंग टू डू दी एक्चुअल प्रोसीजर, न्यूनेटल रिसक्सिटेशन, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, देन दे आर गोइंग टू स्टार्ट. So this is what when we are then when they are going into the labor room, they are giving me the feedback कि मैडम now we are very confident, हम डरे नहीं. जब वो चिल्ला रही थी तो we are remembering the time when you are doing the simulation in our lab कि वो भी कितनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, like that. It really gives the real teaching to the students. So I suggest, I recommend all the teachers to please go through that simulation. It's really very good teaching if you are doing in your that. There are so many studies which are showing that yes, it is very effective. These are the studies.
Now the scenario based competency skill also is there, in which we are making the scenario. बोर्ड का एक scenario बनाया जाता है, and then either we can make the stations also, or we can ask the question in the class. ये आपके ऊपर depend करता है scenario बना करके. Yes, you can give to the student whether, जैसे ये एक scenario का मैंने बनाया है, इसका मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आई हैव रिटन ऑलरेडी, चेकलिस्ट जो सिनेरियो के लिए मुझे लगेगी वो सारा प्रिपेयर किया, केस सिनेरियो बनाया, अदर मतलब सब केसेस अलग अलग हैं, जिसमें एक में लेबर रूम प्रिपरेशन दिखा रहा है. इस सिनेरियो में स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड बाय रीडिंग द सिनेरियो कि उसे क्या करना है. चेकलिस्ट फॉर बर्थ प्रिपरेशन उसी के ही साथ में है ये. एंड देन केस सिनेरियो 2 में कैसे एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, ये नॉर्मल न्यूबॉर्न पैदा हुआ है, तो हाउ शी विल गिव द एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर टू द बेबी, ऐसे करके रूटीन केयर का सिनेरियो. like that we have developed the scenario. You can develop according to your specialty area, and with this scenario based, if you are going to teach, the student will understand more rather than if alone we are demonstrating the skills. तो सिनेरियो बना के चेकलिस्ट यूज करके if we are teaching the student, definitely it will be very effective lab activity for the student. Communication skill, okay, firstly I'm going to cover this. Along with all these, we should never forget how to talk. We have to teach the student. Now it's time, as a nursing educator, this raises the important question: are we assessing what the student know, or are we assessing what they can actually do in the clinical situation? तो अभी तक का जो एनुअल बेस्ड में हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता था, मोस्टली वाइवा लेकर के हम छोड़ देते थे. वाइवा में हमको ये पता चल जाता है कि ये शी इज हैविंग गुड कॉग्निटिव स्किल, but actually she can do or not in the clinical situation, that is main problem. You just look at this picture. There is two students, again two students completing their final clinical, हो गया उनका 80%, वो पास भी हो गए. Now, on the first day of the hospital, patient suddenly develops the breathless. The first student quickly assess the patient. Here, communicate it properly, calmly communicate कर रही है, checking the vital signs, recognizing the emergency, and reform the healthcare team appropriately. Whether the second student knows the theory, she is very good in a theory, but become confused, missed important assessment findings, and struggle to communicate effectively with the patient. So, what do you think? So what type of nurses we want? We want the nurses, those who know the theory, or those who can able to work in the clinical. Definitely those who can work in the clinical area. So here for that we have the OSCE with us, and this is the if you are using the OSCE, the problem will be solved. How? Today the nursing education moves towards the competency, and OSCEs are the best tool to assess the student. So here there are different stations I have shown. OSCE and OSPE is used to assess the student, not for teaching. ये teaching नहीं है. Please make it sure. जब हमने पढ़ा दिया, सिमुलेशन कर दिया, सिनेरियो कर दिया, डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया, अब हमको एग्जाम लेना है. अब वो स्टूडेंट की क्लिनिकल पोस्टिंग भी हो गई, अब हमको एग्जाम लेना है, और हमको एग्जाम ये लेना है कि स्टूडेंट का हमको कॉम्पिटेंसी स्किल देखना है, whether she is able to perform the procedure or not. तो इसके लिए हम स्टेशंस बनाते हैं, that is called as a OSCE और OSPE stations. अगर हम लैब में कर रहे हैं तो OSPE, अगर हम क्लिनिकल में कर रहे हैं तो वो OSCE हो गया. Again, you can see the different stations are there, like 1, 2, 3, 4 stations, and 5 here. 5 stations are there. One teacher is there who is monitoring this bell or time monitoring के लिए बैठा हुआ है, और हर स्टूडेंट के पास हमको एक एक फैकल्टी लगेगा, एक एक टीचर लगेगा जो उसके को नोट डाउन कर रहा है चेकलिस्ट में उसकी चीजों को. तो हाउ टू मैनेज दी OSPE एंड OSCE? You have to select the procedure and the article available होना चाहिए वेबसाइट में. 3 और 5 minutes procedure is sufficient. बहुत लंबा OSCE ना करें, 3 और 5 minutes में जो हो जाए वही हम select करें ऐसे procedures.
सपोज जैसे हमने 5 मिनट का प्रोसीजर सेलेक्ट किया, तो उसमें 4 मिनट आप प्रोसीजर के लिए दें और 1 मिनट आप रीअरेंजमेंट ऑफ द आर्टिकल के लिए दें, क्योंकि यॉस की करने मतलब वो प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए वो फिर रीअरेंज करेगा, मतलब सारे जितने भी सामान उसने ट्रे में रखे हैं वो उसको रीअसेंबल करने के बाद वापस जगह में रखेगा, तो उसके लिए 1 मिनट हमको देना है। 5 स्टेशन सपोज मैंने बनाया, हम 6 भी बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं, 9 भी बना सकते हैं। तो सपोज हमने 5 स्टेशन बनाया, तो एक स्टेशन में 5 मिनट लग रहा है, 25 मिनट और 5 स्टूडेंट लगेगा, क्योंकि वो स्टेशन वाइज घूमेगा। तो 5 स्टूडेंट को कवर करने के लिए आपको 25 मिनट लगा। अगर आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं तो इट विल टेक 250 मिनट, मतलब कि आपको 4 घंटे। आपने सुबह 8 बजे शुरू किया, 12 बजे आपका ऑस्की खत्म हो जाएगा विद ऑल दी ऑब्जेक्टिविटी इन योर हैंड। सारा ऑब्जेक्टिवली आपने उनको इवॉल्वेट किया है, तो ये 4 घंटे में आपके 50 स्टूडेंट हो गए। इफ सपोज आप लंच ब्रेक दे रहे हैं और लंच के बाद आप फिर से आप सपोज 100 स्टूडेंट हैं और आपको आफ्टरनून में भी करना है, तो प्लीज चेंज द प्रोसीजर, क्योंकि स्टूडेंट मिंगल्ड होंगे, लंच में जाएंगे, तो अगेन जो ये 5 स्टेशन बनाए हैं आप उसको चेंज कर दीजिए। मतलब आपको 10 प्रोसीजर रेडी करके रखना पड़ेगा बिफोर हैंड। एंट्री एंड एग्जिट डोर शुड बी देयर। एक बार स्टूडेंट उसकी स्टेशन में आए, फिर उसका एग्जिट डोर बाहर की ओर, वो कभी भी स्टूडेंट दूसरे जिनका नहीं हुआ है उनसे मिंगल्ड ना हो, तो वैसा अरेंजमेंट आप कुछ करके रखेंगे। यदि आपका नेक्स्ट डे भी शिफ्ट हो रहा है ऑस्की, तो डोंट रिपीट द प्रोसीजर, दैट इज द रोल ऑफ द ऑस्की, यू जस्ट चेंज द इंस्ट्रूमेंट, चेंज द प्रोसीजर्स टू द यू आर डूइंग इन द नेक्स्ट डे or after the break. How to select the procedures? So we have the different skill. If you want to check the cognitive, you can use the drug calculation, interpretation of the findings, like ECG 5 जगह में आपने अलग अलग ECG कलेक्ट करके रख दिया, उसकी फाइंडिंग्स आप कर सकते हैं। ड्रग कैलकुलेशन का मैंने एक प्रिपेयर किया है, वो मैं दिखा दूंगी। साइकोमोटर में बीपी ड्रेसिंग, जैसे मैंने अभी साइकोमोटर वाला ही स्किल्स में लगाया है स्टेशन में, एक में बीपी मॉनिटरिंग, एक में टेम्परेचर, एक में लाइक दैट, एक में इंस्ट्रूमेंट चल रहा है। तो इस तरीके से OSCE we can conduct. Communicate patient education. Yes, you can give the scenario. Hepatitis का patient है, what the education you will plan. तो you keep the chart and sketch pen. और वो बच्ची अपने हिसाब से वो एजुकेशन प्लान करेगी अकॉर्डिंग टू दैट। तो कम्युनिकेशन स्किल आप देख सकते हैं। अफेक्टिव के लिए एम्पैथी एंड प्रोफेशनलिज्म, तो उसके लिए केस बना लीजिए, अभी डिलीवरी हुआ है बट स्टिल बॉर्न बेबी हुआ है, नाउ हाउ यू एम्पैथाइज द मदर, लाइक दैट। तो दिस वे यू हैव टू सेलेक्ट द डोमेन, कि कौन सा डोमेन आपको पेशेंट का स्टूडेंट का चेक करना है। Like that you can create the OSCE. So here I have prepared the OSCE checklist which we have prepared in our area. So in pediatrics, like we have make the 5 stations. ये मैंने 1 2 3 4 ये 21 स्टूडेंट का, चूंकि पेपर्स और इन सबका हमको यूज नहीं करना था, तो हमने यहाँ रोल नंबर 1 2 3 4 लाइक दैट हमने लिखा। एक बच्चा आता था, हम उसका मार्किंग इधर करते थे, रोल नंबर वाइज हम मार्किंग करते थे, तो इस वे में हमारा मार्किंग भी हो जाता था और पेपर का यूटिलाइजेशन भी हो गया है। तो एक कंगारू मदर केयर, ये 42 स्टूडेंट्स थे। देन सेकेंड स्टेशन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, 5 मिनट्स दिया था हमने। एंड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, इसमें सिनेरियो बनाया, वहाँ सिनेरियो लिख के रखा रहता है। बेबी इज नॉट क्राइंग जस्ट आफ्टर बर्थ, पल्स इज 80, नाउ watch what the student is doing. So according to the checklist we have to give the tick mark. Then babies, then yeah, that is fourth OSCE station. Male baby born on the mother's abdomen full term and cried just after birth. So the baby, the student should understand that they have to start the routine care. So routine care ke points we have written in that, and we are giving the marking accordingly. And fifth station is the instrument identification. So 4 5 instruments we have kept and we have given the marks accordingly. So this is what we have prepared the OSCE. Now this is the numerical skill, different drug calculation questions we have prepared and kept in there in the OSCE stations. Now there is a clinical marks distribution. I think it is very fair, but ठीक है। नर्सिंग फाउंडेशन में 25 मार्क्स इन फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम में नर्सिंग फाउंडेशन का 25 फर्स्ट सेम का जो आपने इंटरनल दिया है और जो सेकेंड सेम का इंटरनल दिया है, ये 25 ऐड करके वी हैव टू सेंड द इंटरनल मार्क्स। Likewise,
सारे इसका जैसे 5th सेम में भी वी हैव टू कंडक्ट दी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग रहता है 5th सेम में, बट एग्जाम होगा 6th सेम में, तो उसका 25 मार्क्स और 6th सेम का 25 मार्क्स इंटरनल वो हमको भेज यूनिवर्सिटी वी हैव टू सेंड. तो इट इज गिवन इन द सिलेबस, very clearly it is written, so you can see the syllabus and you can find that thing. Now whatever the internal marks, like 25 marks जो हम दे रहे हैं, this is the criteria of giving the 25 marks. Continuous assessment मतलब throughout the 6 सेम 6 महीने उन्होंने जो काम किया वो continuous assessment में है. Now attendance के लिए मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है 2 मार्क्स, क्लिनिकल असाइनमेंट्स 10 मार्क्स. इसमें भी जस्टिफाई कर दिया गया है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का 3, ड्रग प्रेजेंटेशन का 2, केस स्टडी का 5 नंबर. कंटिन्यूस इवोल्यूशन ऑफ क्लिनिकल परफॉर्मेंस जो हम उनको या तो हम मिनी CX से देख रहे हैं या चेकलिस्ट के थ्रू देख रहे हैं या जर्नलिज्म यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप 10 मार्क्स रख दीजिए. एंड ऑफ पोस्टिंग ऑस्की जो अभी हमने देखा, आफ्टर पोस्टिंग आप एक ऑस्की कंडक्ट कर लीजिए, उसका इंटरनल आप 5 दे सकते हैं. कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजर एंड क्लिनिकल रिक्वायरमेंट 3 मार्क्स. तो हम 5 मार्क्स का करते नहीं है, बट वी कैन सपोज इफ वी आर डूइंग इन 50 और 50 में बच्चे को जितना मिला उसके अकॉर्डिंग हम 5 में उसको बाइफरकेट करके निकाल सकते हैं. इसमें कैलकुलेशन बहुत रहता है, इट्स वेरी हैक्टिक टू कैलकुलेट द मार्क्स, बट ये बहुत ही क्लियर रहता है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी. सेशनल एग्जामिनेशन जो हम 2 एग्जाम सेशनल के लेते हैं, फर्स्ट सेशनल सेकंड सेशनल, उसमें हम ऑस्की और DOP करते हैं. तो ऑस्की के लिए 10 मार्क्स है. सपना मैम, सॉरी टू इंटरप्ट. मैम प्लीज माइक के थोड़े पास आएंगे, एक्चुअली वॉइस जो है वो ओके फ्लक्चुएट हो रही है. ओके. तो ऑस्की नाउ इट्स क्लियर मैम. यस मैम. OSCE 10 marks and directly observed practical in clinical setting is about 20 marks. So weightage is given like here. Total we have here we are going to calculate 30. Here we will make a table and table में then we are sending the internal assessment marks. जो ये पूरा हम एक टेबल में लिख करके internal assessment we are sending to our university. Here the 10 marks is given for the continuous assessment. ये सबका हम 30/3 करके 10 निकालते हैं. And then continuous assessment में भी जो उस समय we have conducted the OSCE and DOP in the examination in the hospital, so that we give 15 marks out of 15 we are giving. तो ये 2 सेशनल होते हैं, 2 सेशनल के 15 marks we have to write in that. So in that way, we will get the 25 marks. Out of 25 marks, we will get the internal assessment somewhere. But we have to send the marks sometime out of 50. So in that, we can double the marks. Like जैसे continuous assessment में 10 marks दिया हुआ है, तो we can double it. 20 marks we have to do. और सेशनल के लिए 15 दिया है, that we have to double it, that is 30. Then it will become 20 plus 30 is 50 मार्क्स. तो उसको हम जस्ट डबल कर लेंगे 50 मार्क्स के लिए. दैट इज व्हाट रिटन हियर. एंड yes, yesterday also our resource person, she told about how to send how to do the competency assessment of 8th semester. So we should have we have the 5 specialty and 10 marks in each specialties. OSCE we have to conduct for 5 specialty and 5 teachers will be there, 2 external and 3 internal, different speciality. So that like that we will conduct the examination for the 8th semester, that is based on the only the clinical performance evaluation. Yes, that is the same thing for the 8th semester, competency based assessment. University practical exam means when your examiner is there again, that is what when we are conducting exam for 50 marks. Suppose child health nursing 50 marks we are conducting examination. So again the marks distribution is OSCE at that time we have to conduct, that will give 15 marks, and DOP for DOP it will be 35 marks. So like that we will give the marks out of 50.
This is the DOP evaluation performer. I have taken it from the Baswan Thapa book and we are following that also. The marks can be distributed according, like 35 marks we have to give, it is total 40. So we can decrease the numbers anywhere if you want. So this is the it is a one sample of performer. This is the clinical assignment list. Already it is given in your logbook. So we have to follow that clinical assignment list. You go through that 446 page, every syllabus, every specialty assignment is already given. So we are following only that. We are following the module and when it is completed that, and also we are providing the module certificate to the students when they are completing it. So this assignment list is already given in our book. So according to that, we need to complete it. This is the mini CX which I have, which I want to show you how to maintain. If we are going into the ward and we are doing the assessment, continuous assessment of the student in the ward. So we can, this can help us to use the remediation plans. So how it works, it stands for mini clinical evaluation exercise. So I will show the format. It will do, first we will observe the student, then we will observe in some special focus area like history taking, physical examination skill, communication, professionalism, clinical judgment. ये बहुत जल्दी हो जाता है, मीन्स 10 to 15 minutes it will take mini CX. तो आप कर सकते हैं, you can document it also. Or feedback. So just look at this mini CX assessment form. This is the student profile, student name, the patient in which she has shown her competency assessment. This is the final, this is the scoring criteria for your competency assessment. Now you have seen the history taking, communication skill while the patient is talking with the patient, student is talking with the patient, pediatric physical examination, judgment, nursing care planning, infection control, like that. These are the competencies which you are seeing over there. You have the small checklist also, like preparation of professional behavior, how she introduced, everything is there. Pediatric assessment skill, nursing management, what she has done. This is the important feedback session. Strength identified, whether she is able to talk properly, counsel the patient properly or not. We have to write down the strength, what she has done well. Areas needing improvement, she was not able to perform the vital signs, she is forgetting to take the history. So that need to be improvement, action plan for the improvement. Now we have to write that student are asked to read, means learn about the history taking once again, and detail about the history taking, chest examination she has to be prepare, and then repeat, she will show the competency in the hospital. So in this way we can prepare the mini CX. Faculty notes at the last we can write down, so that will give the clear idea. It's just a small mini CX is prepared for the student Anjali. She has shown this case. History taking में इतना she got that number, and faculty comment, student communicated effectively with the mother, performed respiratory assessment appropriately, demonstrate good professional behavior, need more practice in systemic chest examination. So like that we can prepare the mini CX for each. So it will give us, it will help us for remediation plan, and also objectivity will be there because we are talking with the student also where the main problem is there. Reflective journal is also, it's an answer one important question, that what did the student learn from the clinical experience. So that is also we can use for the remediation, your means teaching. How it works like that. It's a simple structure of reflective. When you are going into the ward now, you are having the diary, so you can use that reflective journal. What happened, descriptions you have to write. What did you feel, this is about the student. What went well, went or not well. What did you learn, and what will you do next time? For example,
you have visited to clinical area, medical area, you have written situation, student perform vital signs assessment for the fever patient. What happened? Today I assessed vital signs. This is written by the student. Today I have assessed the vital signs of 55 years old admitted in there. What did I feel? Initially I was nervous, but after communication with the patient, I became confident. What went well? Measure temperature, pulse, BP correctly, maintain the patient privacy. What did I learn? I learned that communication helps to reduce patient anxiety and improve the patient cooperation. What will I improve? Next time I will improve my speed and interpretation of abnormal findings. So this is what one example of reflective journal, which it will help us for the continuous assessment. So it's a model of best clinical assessment strategy. Means if you are doing formative assessment, or you can say continuous assessment during the posting, you can use direct observation, you can use the DOPC, PS, mini CX form you can use, clinical logbook the students are having, which INC has prescribed, the procedure which they have shown, you have to sign it with the date, reflective journal, case presentation, simulation assessment, and this is the summative assessment. That is what at the end of the posting or at the examination time, you can use the OSCE, OSPE, clinical viva, and final clinical performance evaluation. So continuous assessment, and at the end, at the time of examination, this method you can use. So when we are using that method, our student will be happy, our patient will be happy, and they will be well competent enough. Now, what are the challenges? Yes, I'm going beyond. I think I have the time now. Jackie, madam. Yes, ma'am. You can continue, ma'am. So now the next one is the challenges. As we know, it's the time to discuss. I think challenges is, yes, there is a lot of challenges to implement this syllabus and develop the clinical competencies. So according I think the first one is the curriculum reconstruction and academic planning. You know, पहले हम annual में थे, annual में पूरे साल भर की planning रहती थी. कुछ 6 महीने हम रिलैक्स हो गए, तो नेक्स्ट के 6 महीने वी आर वेरी फास्ट टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट्स, एंड ऐसे स्टूडेंट भी करते थे. लेकिन अभी सेमेस्टर सिस्टम है, एंड सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू द शॉर्टर स्ट्रक्चर मॉड्यूल. Theory and the clinical postings are aligned semester wise, और internal assessment need a proper scheduling. तो अब ये चैलेंज ये है कि वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक फॉर आवर 6 मंथ. हम कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते हैं एक्चुअली. 6 months we have to do our work continuously for the semester. The problem is that अगर कभी improper academic calendar, जैसे शुरुआत में हुआ था हमारे, मतलब we are, थोड़ा सा हमको टाइम लगा था एडजस्ट होने में सेमेस्टर में, क्योंकि यस चैलेंजिंग तो था कि हम एनुअल से बिल्कुल सेमेस्टर में शिफ्ट हो रहे हैं. बट अगर प्रॉपर एकेडमिक कैलेंडर्स फॉर्म हो जाए, हम अभी भी लर्न कर रहे हैं, प्रॉपर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. अभी हमारा एक बैच लास्ट 8 सेम में पहुंचा है. तो वी हैव डन दी सो मेनी मिस्टेक्स विच वी आर गोइंग टू लर्न बाय दैट मिस्टेक्स. तो वो हम प्रॉपर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. एंड डिले इन टाइम टेबल प्रिपरेशन, थोड़ा सा भी हमने डिले कर दिया, छुट्टी पे चल दिए या कुछ हो गया, टीचर जो असाइन थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो टाइम टेबल डिले होने से आपका पूरा टाइम शेड्यूल खराब हो जाता है. पुअर सिंक्रोनाइजिंग ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस लर्निंग. इसमें थ्योरी जैसे फर्स्ट सेम को यदि हम चाइल्ड हेल्थ के लिए स्पेशली कई बार फेस करते हैं, थ्योरी आप थोड़ा पढ़ाना है, देन यू आर गोइंग टू शो दी प्रोसीजर, तो उसके बीच में कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है. अब वहीं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का भी एग्जाम है और कम्युनिटी का भी एग्जाम है, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली हमको चैलेंज हो जाता है टाइम टेबल एडजस्टमेंट के लिए. जैसे 5th सेमेस्टर में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एग्जाम नहीं है, वो सीधा है 6th सेमेस्टर में. 5th सेम में मोस्टली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एग्जाम्स प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, और उनके आवर्स भी बहुत ज्यादा हैं. तो मोस्टली ऐसा होता है कि अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है कि नहीं, पीडियाट्रिक तो या मेंटल तो अभी 5th सेम में नहीं है, 6th सेम में है, तो चलो हम 6th सेम में उसको हम ज्यादा डील कर लेंगे. लेकिन आई रियली मेक यू श्योर कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि 5th सेम का जो पार्ट है, ट्राई टू कंप्लीट इट इन दैट वे, क्योंकि 6th सेम में आते बहुत सिलेबस फिर से नया वास्ट हो जा रहा है. तो हम बहुत हैपजार्ड हो जाते हैं कि यार इनको हमने 5th सेम में तो पढ़ाया नहीं, अब 6th सेम में हाउ टू कवर दैट थिंग. क्लिनिकल पोस्टिंग, उनके लैब, अब 6th सेम में तो लैब, स्किल लैब के लिए आवर्स ही नहीं दिए हुए हैं.
तो उसको हमको 5th सेम में ही कंप्लीट करना है. जो रिक्वायरमेंट जिस सेमेस्टर की है, ट्राई टू कंप्लीट इन दैट सेमेस्टर. So that is what the challenge. So we are also adjusting into the new academic planning. Administrative workload, yes, there is a increased administrative workload. Attendance, क्योंकि आपने देखा attendance में marking है, तो बिल्कुल regular maintenance of that attendance is required. Internal assessment के लिए इलेक्टिव और मैंडेटरी मॉड्यूल का चैलेंज बहुत आता है, क्योंकि मैंडेटरी इज गिवन इन दी सिलेबस, इलेक्टिव जो है वो पीछे लिखा हुआ है. तो समटाइम वी गेट कंफ्यूज्ड कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के इलेक्टिव मॉड्यूल्स का मार्क एक बार भेजना है, सेकंड थर्ड का एक बार भेजना है. तो थोड़ा कॉन्शियस वहां रहना है हमको, जब हम इलेक्टिव मॉड्यूल्स के मार्क्स और मैंडेटरी मॉड्यूल्स के मार्क्स हम जब बना रहे हैं, इंटरनल असेसमेंट बना रहे हैं और उसको यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं. Practical scheduling, clinical rotation, yes, these are all some more, मतलब 6 महीने में you have to schedule it, you have to send the information to the hospital. So that is also a challenge. And the major issues, yes, strong academic coordinators होने बहुत जरूरी है, जो पूरे टाइम attentive और alert mode पे काम करें semester system के लिए. शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी स्किल लैब एक्टिविटीज बोला, लास्ट टाइम फर्स्ट क्लास में सर ने भी बोला था कि हाउ टू मैनेज. तो यदि अगर हमारे पास क्लासरूम इनसफिशिएंट है, लिमिटेड स्किल लैब्स हैं, छोटे हैं, सिमुलेशन फैसिलिटी नहीं, इक्विपमेंट्स कम है, लाइब्रेरी में रिसोर्सेज कम है, तो अगेन इट्स अ बिग चैलेंज, क्योंकि आपको सिमुलेशन करवाना है, यू शुड नीड ऑल टाइप ऑफ इक्विपमेंट. सपोज करके हम नहीं करा सकते हैं. सफिशिएंट क्लासरूम्स चाहिए आपको, क्योंकि आपका फर्स्ट सेम से सेकेंड सेम अलग बैठेगा, देन थर्ड सेम फोर्थ सेम अलग बैठेगा, तो कई बार मिंगल्ड हो जाते हैं. तो उसके लिए भी अगर छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो बहुत दिक्कत आने वाली है. देन क्लिनिकल पोस्टिंग चैलेंजेस, ये भी है. कई जगह हॉस्पिटल अभी स्टूडेंट्स आर मोर, बहुत सारा स्ट्रेंथ रहता है स्टूडेंट्स का, 100 150 है तो ठीक है, 150 स्टूडेंट्स हैं तो लिमिटेड हॉस्पिटल एफिलिएशन, 50 बिस्तर का एफिलिएशन लिया हुआ है. अब वहां पर आप हाउ टू यू विल परफॉर्म द क्लिनिकल प्रोसीजर, 50 स्टूडेंट पेशेंट टीम. तो दैट इज व्हाट द चैलेंज. हाई स्टूडेंट पेशेंट रेशियो, lack of specialized exposure, advanced procedure you cannot able to show. So yes, that is what the challenge for the teachers. बहुत सारे challenges I got, but this is what very important challenge. As I told you that simulation we should learn before starting this, क्योंकि simulation और scenario based को ऐसे एक दो क्लास में नहीं होगा वो. You should take the proper training for that, then only you will become a confident enough to run the simulation and to give the scenario based learning or teaching. तो ये अडेप्ट करना है ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के. तो ये चैलेंज है हम टीचर्स के लिए कि वी हैव टू टेक द ट्रेनिंग फॉर दैट. एंड एक्चुअली एनुअल सिस्टम में तो लॉन्ग टर्म एनुअल कवरेज हो जाता था, बट अभी हमको आउटकम बेस्ड टीचिंग, कॉम्पिटेंसी फोकस टीचिंग एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन वी हैव टू डू. So teacher must be shifted from preparation of the examination to the teaching for the competency. Or teaching for the competency के लिए teacher should also be competent enough to develop the competency among these. So thank you. Curriculum reforms become successful only when the implementation is practical and inclusive and quality driven. So I'm very thankful to you all for your patient listening. Thank you, Rakhi. Over to you. Thank you so much, ma'am, for enlightening us on clinical practicum, utilization of skill lab, clinical learning outcomes, continuous clinical assessment, and challenges in implementing the semester system. This promises to provide practical perspectives that will further empower us as nurse educators. Thank you, ma'am. The session is now open. The participants can ask the questions to our resource person. And you may also ask the challenges that you face in the academics that is based on the semester system. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. आवाज आ रही मेरी? जी जी मैम एक्चुअली स्मॉल क्वेश्चन. अभी ठाकुर मैम ने बताया कि जैसे कि सब लैब का अपना क्लिनिकल टाइम दिया हुआ है. Lalit Kumar sir, you can please unmute yourself and ask the question.
Yes, I unmute ना. Can you हाँ, hear me? आपकी आवाज आ रही है सर, आ रही है। जी जी। एक छोटा सा सवाल था मैम ठाकुर मैम से. ठीक सर, म्यूट हो गए। अभी हाँ हाँ, अब अभी सुनाई। ठीक है। हाँ, Ma'am, there is a question from Sunimol Ajit Kumar, ma'am. Can you एक explain once again how to do signature in Twinkle, logbooks? please hold down. Dr. Lalit Kumar sir is asking question. मैम इन कम्युनिटी सब्जेक्ट इफ यू आर सेइंग, तो उसमें स्किल लैब के लिए कोई टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी काफी फोकस है हमारा कम्युनिटी लैब पे. अब हम उसे कम्युनिटी लैब कहें या कम्युनिटी सब्जेक्ट का एक स्टोर कहें, क्या कहें हम उसे, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रैक्टिकल कुछ क्रेडिट भी नहीं मिल रहा है, कोई क्रेडिट आवर्स भी हम उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं. Ma'am, there is न a कुछ question from Sunimol, ma'am. Please, Twinkle, hold down. And there is a discussion on question. Okay, ma'am. तो क्या स्किल लैब का या उस लैब का क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ लैब इन आवर डिपार्टमेंट, क्योंकि कहीं कुछ काम तो है नहीं उसका. सर एक्चुअली मैं भी सरप्राइज थी ये देख के कि स्किल लैब एक्टिविटी के लिए कम्युनिटी में कोई भी आवर्स नहीं रखे हैं, लेकिन जहाँ पर स्किल लैब और उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसमें उन्होंने ये जस्टिफाई किया है कि 10% प्रोसीजर्स यू कैन डू इन कम्युनिटी एरिया ऑल्सो, ऑल्दो दे हैव नॉट गिवन एनी स्किल लैब आवर्स फॉर द कम्युनिटी। तो वो हम कम्युनिटी में जैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी तो आपको करना ही होगा ना सर एट द एंड ओस्पी. ऑफ द पोस्टिंग। ओस्पी. जैसे हाँ, उसकी आप करेंगे, उसकी आप करेंगे क्लिनिकल इसके लिए। हेलो यस मैम. सर, सर एम आई ऑडिबल? यस मैम. यस मैम. हाँ, तो एक जो एक पॉइंट बस मुझे ये मिला कि 10% स्किल लैब एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म्ड इन द कम्युनिटी एंड कम्युनिटी एरिया। तो हम जो कम्युनिटी आपने लैब बड़ा अच्छा आप लोग बना के रखते हैं कम्युनिटी लैब को, तो कम्युनिटी लैब में हम ऑस्पी परफॉर्म कर सकते हैं। इज इट सर? आर यू गेटिंग मी? जो मेरा आई कैन नॉट से कि मैं सही बोल रही हूँ, मैं और भी जितने भी हैं हमारी फैकल्टीज जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं आइडिया लेना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अभी जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो कम्युनिटी एरिया में होता है, टीचर्स आर गोइंग ओवर देयर और परफॉर्मिंग देयर प्रोसीजर्स। जब ऑस्की का टाइम होता है तो चूंकि ऑस्की हम हर परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं रखे हुए हैं, तो यू कैन यूटिलाइज योर लैब फॉर दैट, आई थिंक। वो सही है आपकी बात, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव कैलकुलेशन के अंदर जब हम जाते हैं, जब हमारा वर्कलोड कैलकुलेट होता है, तो वहाँ पे 40 आवर्स को हम एक क्रेडिट पॉइंट दे रहे हैं लैब के अंदर. तो ये थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हो जाता है, ये छोटा सा प्रॉब्लम था. आई थिंक इस पे आईएनसी को में भी थोड़ा डिस्कस करना चाहिए. बिल्कुल अदरवाइज सर। टीचर का जो वर्कलोड है वो सही से कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है. एक्चुअली वी आर वर्किंग इन ईआरपी. हमारे ईआरपी के अंदर जब हम स्किल लैब डालते हैं, जी। अगर हम लैब में जा रहे हैं तो ईआरपी में हम स्किल लैब डालते हैं, बट स्किल लैब के लिए कोई क्रेडिट नहीं है, कुछ ओवर्स नहीं है, तो थोड़ा सा जो हमारा टेक्निकल टीम है उसको प्रॉब्लम आ रही है. आई यस थिंक सर। इट्स नीड टू डिस्कस विद, या और कोई ग्रुप के अंदर कभी हो ऐसा तो आईएनसी से डिस्कस किया जा सकता है इस चीज में. यस सर, इट्स वेरी गुड पॉइंट आई थिंक, क्योंकि मुझे भी लगा कि कम्युनिटी का एक तो 2 बार एग्जाम है और उसमें एक भी स्किल लैब आवर्स नहीं दिए हुए हैं, जबकि लैब है हमारे पास में। तो दैट शुड बी यस पॉइंट टू बी नोटेड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू. थैंक यू सर, थैंक यू। Twinkle, you can ask question. Ma'am, there is a question from Sunimol, ma'am. How we can do signature in the logbook of students? There is a last column in the logbook where we are going to sign. There is already written in the logbook signature of faculty, and at the end of the procedures again there is a signature of class teacher and principal. So I think you just go through that syllabus. It is there, the column for the faculty's signature. There we can do that.
And also the logbooks are available in the shop also. They have made it according to the INC guideline. So there also we have the signature column, date and the signature column. So you can purchase that thing. Thank you, ma'am. Any more questions from the participant side? Thank you so much, ma'am, for answering all the questions. As we move ahead, may the knowledge gained during this FDP inspire us to transform our classrooms, strengthen clinical teaching, and nurture competent future nursing professionals. Ma'am, there is one more question. Dheeraj. Yes, Dheeraj sir, you can unmute yourself and ask directly to ma'am. हेलो गुड आफ्टरनून मैम। Yes, sir. Good afternoon. मैम मुझे एक क्वेश्चंस पूछना था, जैसे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का कोई स्पेसिफिक लैब तो नहीं होता है, तो उसके लिए कुछ ओएसपी एग्जामिनेशंस हम लोग कहाँ करवा सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं क्या? सर आप जो क्लिनिकल सेटिंग में जाते होंगे, हाँ हाँ। और वहां पर आप OSCE या आप वो कंडक्ट कर सकते हैं अगर वहां कुछ आपको एरिया मिलता होगा। तो उसको तो हम ओस्की कहेंगे ना, तो उसकी मतलब उधर करवाएंगे। ओएसपी वगैरह आपने बोला कि कुछ प्रैक्टिकल लैब में कंडक्ट करवाते हैं। OSCE के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद कोई मेंटल हेल्थ वाला इसकी जानकारी अच्छे से दे सकता है। और यदि मैं बोलूं तो वी कैन कंडक्ट इट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, that nursing foundation lab we can use for small procedures and for counseling skill. We have to check in that counseling, basically we are checking that thing ना सर कि counseling देख रहे हैं या empathy देख रहे हैं। तो आपके इसमें बेसिकली यही मेंटल हेल्थ में रहता है प्लान। So we can use that labs also for OSPI, like small stations you can prepare for counseling, and you can use the your college itself. Ma'am, I think Dr. Grace ma'am is here, so she can emphasize the lab. Grace ma'am, please, over to you. Yeah. Good evening, everyone. Whatever ma'am said, Sapna ma'am is already elaborated what we have to do in mental health, but how we used to conduct it, we are using medical surgical lab or a fundamental lab, any lab you can take, and in that न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का ऑस्की बना सकते हैं आप, रिफ्लेक्सेस का ऑस्की बना सकते हैं आप, रीस्टेनिंग का ऑस्की बना सकते हैं आप, और फार्माकोलॉजिकल जो है वो नॉन ऑब्जर्वेंट होता है, बच्चा उसको भी लिख सकता है। ठीक है, सो लाइक दैट ओनली वी कैन मेक इट, and how ma'am told that we can go ahead for the therapies also, and we can go ahead for the counseling also. Like you are, if having background of the mental health nursing, so you know that we are having a number of therapies also. So if we already trained our students in 6th semester and 5th semester how we can perform OSCE procedures, so वो हमें difficult नहीं पड़ेगा। और आपका question था OSCE हमें कॉलेज के लैब्स में करना है, तो बेटर इज दैट अगर इफ यू आर नॉट able to get fundamental lab, if you are not going to get the OBG lab, child health lab, or any lab, so you can ask to your administrators that they will give you the psychiatry lab also, because we are doing like that. But you can perform in med-surg lab also, and you can perform in the FON lab also, because you will get the beds there. So we are doing like that only. Any Okay, other thank you, question ma'am. related? Hanji, Hanji. Thank you. Thank you, ma'am. Ma'am, there is a question from Jayvin Jay Singh, sir. For 8th semester, the objective is not clear, ma'am. Which objective? I am not clear.
Sir, please elaborate. What do you want to ask? Objective for examination? I'm also not clear, sir. Please elaborate. It is not clear in the question actually. During internship time, what OSCE to cover? Oh, OSCE, just like it is already given, sir, that for each specialty, means pediatric, community, med-surg, mental and nursing, and FON. For 5 main specialty, you have to conduct the OSCE or OSPE in your setting, and for each 10 marks is distributed. So that throughout the session means they have given the weekly rotation plan also for internship duty. So suppose if the students are going into for the pediatric posting, then after the end of pediatric, you can conduct one OSCE. Then after mental health, you can conduct one OSCE, and after community also, you can conduct. So that is what for the internal assessment, continuous assessment. And for the end of the examination, again DOP and the OSCE, just like the others. तो वो 10-10 मार्क्स के रहेंगे, 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा. That is all about. Thank you, ma'am. There is one more question, ma'am. What list of procedure we should do, whether we should cover all 3rd and 4th semester topic of medical surgical nursing? If you want to cover the medical surgical nursing, what list of procedure you have to perform through? But she want, please repeat the question. Ma'am, the question is what list of procedure we should do, whether we should cover all 3rd and 4th semester topic of medical surgical nursing. Actually, in the 3rd semester, you will get the list of procedure in your syllabus, madam. You just open the book, you will get, already it is there, listed down in our syllabus, that what procedures you have to cover in 3rd semester and then in the 4th semester. And according to that, you can plan. So separately, you on 3rd semester you are having the adult health nursing examination, then again in the 4th semester also. So likewise you can do. Just Rakhi, all the list is given there. Yeah. Rakhi ma'am, can you please unmute Mr. Jevin? Yes, ma'am, it's already done. Yeah. Now you can ask Hello, ma'am. question directly. Yes, I'm sorry, ma'am. Actually, I was unmuted, so only I asked actually for 8th semester for OSCE plan for all the specialties for example medical surgical. So as I'm an HOD of medical surgical, I just want to have a clear idea about it. Just I want to find out if there is any list of procedures that should be taught for 8th semester, or we should cover all the 4th and 3rd semester syllabus OSCE on the 8th semester time. Sir, what I understand is that you are asking that in the 8th semester, what in the specialty, what are the procedures which we will cover into the different OSCE stations? This you want to ask. Am I right, Yes, sir? understand. Yeah. Yes, sir. So, sir, it's all over it's mingled. It's it started like FON, it is all the procedures of the FON. 1st semester and 2nd semester. It will cover all this thing. Like in our 8th sem student, if the child health nursing posting is there, so I am covering all the child health nursing procedures to them. I'm asking them to do the OSCE for any type of procedure I will give, which they have learned into that 5th or 6th semester. So it's just a mingled of all the procedures. There is no separate list of the procedures are given for the 8th semester. So again, they have to repeat it all. That's why it's combined. There is nothing. There is no theory portion in the 8th semester. Only the procedure and duties are there in the 8th semester. So they will repeat all these competencies again and again in all these speciality actually. So,
Is it? I think I'm able to answer you, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I got it, ma'am. So actually, we are repeating it again, ma'am, Yeah. actually. But for first, when it was year-wise, we did not repeat it for the students. But when it is semester-wise, we are repeating it again. Repeating this OSCE part again to the 8th semester. From 3rd and 4th or 1st and 2nd, what they've learned, again we are repeating in the 8th semester for them to Yeah. get this OSCE score. So it is a repetitive of practical pattern. So Yes, that means when they go out, they'll be very effective in their clinical skill. So that is the most important part. But I think that if there was some objectives based on this syllabus wise, so it will be very easy for teachers to cover the what can be done during the 8th semester, because everyone will be having a doubt what topic can be covered, whether it's a basic procedure we should cover, or we should cover like ventilator care or like that. So the confusion of the teachers will be more in this. So what to cover? Because when we, as a teacher, we think one will be easy, but other teacher will think it will be very difficult the procedures. So I think that there is some overlapping of procedures will be there. So it's a very difficult part to cover all the 2 years in a single 6 months time. So I feel that we are very overflowing with more procedures to teach to the student at the time of 6 semesters. Sorry, 8 semester. Yes, sir. I think so. All the semester, if we will see it as it's an overflowing of all the subjects and all the activities. But 8th semester, the one thing is that we are not having any theory classes. If we are utilizing that student in, suppose it's just an idea, if we are having like teachers are not there, so we can utilize that 8th semester students to repeat the procedure in front of the 5th semester or in front of the 6th semester. So we can utilize them as resources, as we think they again we have to repeatedly show to them. Already we have shown the procedure to them, so we can take the written demonstration and we can utilize them for the junior students also. They can show, they can see how they are performing, their seniors are performing the procedures. So with that, their help we can take in the 8th semester. Okay, thank you. Thank you so much, ma'am. So I think all the questions are done. Moving forward with the validatory session, I would like to address the participants to please give your reflections and your experiences on this FDP, National FDP program. Sapna ma'am, can you please stop sharing? Yeah. I have already stopped sharing. It's already stopped. Oh, okay, ma'am. Any participants would like to give their feedback on the sessions? Participants are giving feedback in chat box. Dr. Lalit Kumar sir is raising his hand. Hello, can you hear me? Yes, sir. मैम बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का और सारा, और मैं कहूँगा कि लगभग 20 से 21 साल पहले मुझे मौका मिला था चौथराम हॉस्पिटल आने का, और मैंने वहाँ का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो आपका जो काम करने का तरीका देखा था, बहुत इम्प्रेसिव था। और उसी के कंटिन्यू में जो आपने जो FDP अभी की है, सबसे अच्छी चीज़ तो ये रही कि आपका टाइम बहुत शार्प 3 o'clock आपने स्टार्ट किया और पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट किया है आपने, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहा इस वजह से और एंगेजिंग रहा।
आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि फिर से कभी ऐसा हो कि बहुत सारी एफडीपीज होती हैं लेकिन वो नर्सिंग से रिलेटेड नहीं होती है। मैंने बहुत सी एफडीपीज ज्वाइन करी हैं, एजुकेशन के लिए होती हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए होती है, लेकिन वो नर्सिंग से रिलेटेड इतना नहीं होती है जितना आपने बताया। और एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी कोई ऐसा सेशन भी आप रखें कभी, कि जिसमें ओपन डिस्कशन हो सके। जो हमारा गजट वगैरह है उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं उस चीज को। लिखा हुआ है, उसको पढ़ सकते हैं, पर हम उसको एक्सप्लेन या एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं अभी तक भी। और बहुत सी चीजें जो हैं आपने इस 4-5 दिन के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर करी है। सो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे काफ़ी स्टाफ मेंबर भी आपकी इस एफडीपी को ज्वाइन किए हुए हैं, उन सभी की तरफ से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you, sir. Thank you so much, And sir, for the feedback. बहुत अच्छा आपने इनपुट दिया है। फ्यूचर विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस गजेट एंड द रिकमेंडेशन, सो दैट कलेक्टिवली हम अपना रिकमेंडेशन सेंड कर सकें आईएनसी को कि व्हाट challenges exactly we are facing while implementing the semester based system, because it's new for us, but it's already executed in many other states, so might be they are also facing the same kind of a problem. So in future, yes, definitely we'll do that. Thank you so much. I would like to request Kirandeep Kaur ma'am to please unmute yourself. Hello, good evening, everyone. I'm audible to everyone. Yes, ma'am. Actually, in 2013, I came to Choitram Hospital. I had experience of 3 months during my M.Sc course, and it was really a very good experience at that time. And right now, I am working here in Adesh University, Bathinda. And if I talk about sessions, all sessions were very good. But the session which I liked the most is about credit hours, and which was really need to me कि like पता चले कि कैसे credit hours जो हैं वो LCPA कैसे count करते हैं. So that I like the most. And thank you so much, ma'am, for organizing such a beautiful sessions. And I hope कि आप आगे भी ऐसे ही conduct और organize करेंगे. And we will definitely join. Thank you so much. Thank you, ma'am. So moving forward, I would like to request all the participants to please fill the post-test link and the feedback form. After filling the feedback form, we will be able to give you participation certificates. Now I request Professor Rani Chandel ma'am, the organizing secretary of this 5-day National Development Faculty Program, to please give the overview of this development program and deliver the vote of thanks. Thank you, Twinkle. Good evening, everyone. Respected organizing chairperson, esteemed resource person, distinguished participants, and faculty member. As we come to the end of this 5-day National Faculty Development Program, I would like to take a few moments to reflect on our learning journey. This FDP was organized with the purpose of helping faculty members understand these challenges and prepare for their effective implementation. During the last 5 days, we had the opportunity to learn from experienced academicians who have been actively working with the semester system in their institution. On 15th June 2026, Professor Grace Madhona Singh, Professor and Head, Department of Mental Health Nursing, Swami Rama Himalayan University, Uttarakhand, guided us through the topic Overview of the Semester System, Core Competency, Curriculum Structure, Modules and Implementation Plan. Her session provided a strong foundation for understanding the philosophy and framework of the revised curriculum. As a token of our appreciation for her valuable contribution, we are pleased to present this certificate of appreciation to you, ma'am. Thank you so much, ma'am.
On 16th June 2026, Mrs. Sharanya Pillai, Vice Principal, Tanishq College of Nursing, Nagpur, delivered an enlightening session on effective implementation of competency-based curriculum, mentoring of nursing students for academic and clinical excellence. Her session offered valuable insight. As a token of our appreciation for her expertise, we are delighted to present this certificate of appreciation. On 17th and 18th June 2026, Mrs. Ratna Tadi, Associate Professor, Geetam Institute of Nursing, Geetam University, Vishakhapatnam, Andhra Pradesh, conducted two highly informative sessions on academic evaluation in the semester system, examination system, assessment strategies, grading, and transcript framework, and internal assessment and university examination process in the semester system. Her session provided clarity on assessment practices within the semester framework. As a token of our appreciation for her scholarly contribution, we are pleased to present this certificate of appreciation. Today, Mrs. Sapna Thakur, Associate Professor, Government College of Nursing, Durg, conducted an engaging session on enhancing clinical practicum, assigned based learning, and logbook documentation, and along with that, challenges in the implementation of the semester system. Her session highlighted practical approaches to strengthening clinical education and addressing implementation challenges with the semester system. As a token of our appreciation for her valuable insight and practical expertise, we are honored to present this certificate of appreciation. Thank you all, resource person. I am pleased to share that this faculty development program received an encouraging responses from nursing educators across the globe. A total of 311 participants registered for the FDP, representing Madhya Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, Kerala, Punjab, Rajasthan, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Haryana, Karnataka, Himachal Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Meghalaya, Jharkhand, West Bengal, Bihar, Odisha, Delhi, Pondicherry, Nagaland, Maharashtra, Telangana, and participants from Doha, Qatar. This wide representation reflects the growing interest and need for understanding the semester-based nursing curriculum and its effective implementation. I extend my heartiest thank you to all the participants. Now, as we move towards the conclusion of this program, I would like to express my sincere gratitude to all those who contributed to this success. First and foremost, I extend my heartfelt thanks to the management of Choitram Group for their constant encouragement and for providing the necessary resources, the facilities that enable us to organize this national academic initiative. I would also like to convey our special appreciation to Choitham International School for providing robust internet infrastructure and technical support, which ensured the smooth and uninterrupted conduct of all sessions throughout the 5 days. My sincere gratitude goes to our organizing chairperson and principal, whose guidance, trust, and freedom to innovate empowered us to plan and execute this FDP effectively. I extend my heartfelt thanks to all our esteemed resource persons for generously sharing their expertise, experiences, and practical insight. Your contributions have enriched the learning experience for every participant and added immense value to this program. A special word of appreciation goes to our dedicated organizing team. Their commitment, coordination, and teamwork ensure the seamless execution of every aspect of FTP. I would particularly like to acknowledge Professor Yasmin Sharma for beautifully managing the IT operations and ensuring the smooth conduct of all the online sessions. My sincere appreciation goes to all faculty members and participants from various institutions who attended the sessions regularly, actively participated in discussions, and contributed to the vibrant academic environment of this FDP. Finally, I extend my gratitude to everyone who directly and indirectly contributed their time, efforts, and support towards the successful completion of this program. Thank you all for your cooperation, enthusiasm, and commitment to advancing nursing education. Together, let us continue to learn, innovate, and transform nursing education for the future. Thank you once again. Thank you so much, ma'am. I Thank you to now all the request all the participants to please on their cameras for the group photo session. I sincerely thank Sapna ma'am, Dr. Grace, and all the resource person who take out their time and efforts, so in-depth efforts, so that we get a basic understanding of implementation of curriculum system. Thank you so much. Thank you.
Thank you, Shrija ma'am, for inviting us to share our experience. And I'm really very grateful to all your team, Rakhi also, and Yasmin, Twinkle, everyone. And really, it's give me. We are having so many other work, but this gives us again to think about the syllabus, again to reopen the things. Although we are yes, बहुत बार ऐसा हो रहा है कि हम उससे जूझ रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सकें. नाउ फर्स्ट बैच जब हमारा पास आउट हो रहा है, so we have learned lot of things, so it's a platform where I can share my thoughts. So I'm very thankful to you all also for inviting me in this very informative to get the information. I have also attended the two FDP. So it was also very nice sessions. First session also Madam has taken very nicely. So thank you to all the resource person. Thank you. Thank you, ma'am. I request the participants to please switch on their cameras. Thank you all. I request all the participants to please fill the post-test and the feedback link. The recordings of all the 5 days is available on our official YouTube channel of Choitram College of Nursing. The participant can access it anytime. Stay inspired, stay committed, and continue making a difference through nursing education. Thank you and wishing all success in future endeavors. Have a nice day. Thank you once again. I think we are ending the session. Thank you so much. Have a good day and happy learning. In future, we'll stay connected. If Sharanya ma'am and Ratna is there, thank you so much for the same. Thank you, ma'am. Actually, my network issue is going on. That's why. Thank you so much, Yeah, ma'am, for inviting. Thank you so much, ma'am. Participants who have filled the feedback link and post-test link can leave the meeting.
Ma'am, thank you. Just I want to take a picture of it. Yes, ma'am. एक सेकेंड साइड बाय साइड पे कर लेते हैं ना. Take a picture of it because I'm not able to do it. उसका ले रहे हैं screenshot. यस. हाँ. Vishali, can you turn on your camera? Kapil, you also. Thank you. Just Thank a you. second. ओके डन दीदी, मैं भेजती हूँ आपको. Done. Thank you so much.